So now, if I tell you about that HDFC Bank takes money from SBI on short notice. So which is the schedule in which HDFC Bank will keep it? HDFC Bank has taken money on short notice from SBI Bank, Seventh schedule. schedule number 7. And where will SBI keep it as? What, sir? Where will HDFC keep it as? HDFC कहाँ पे रखेगी? Again, I'll tell you the question. Maybe you didn't understand my question. HDFC Bank takes money from SBI on short notice. So HDFC Bank, SBI के लिए it is money at short notice because for SBI it is an asset. SBI ने पैसा HDFC को दिया है तो वो 7 में रखेगी SBI. लेकिन HDFC कहाँ पे रखेगी? Liability. तो लायबिलिटीज में Liabilities में कहाँ पे? 1, 2, 3, 4. बोरोइंग्स Exactly, for borrowings. Okay. So this is what you need to understand. There is another question which I can ask. For example, I am giving you uh, HDFC Bank takes away a house worth rupees 50 lakhs, which was taken over for non-payment of housing loan. So where it will keep now? Where this asset will be classified as? Investment, advances, fixed asset, other asset. अदर असेट्स Always other assets. Keep that in mind. Why? The reason is that why other asset? Because any asset which is not related to your business, banking rule says very clearly, any asset which is not related to your business shall be transferred to other assets. Fixed assets may only those assets which you have bought, which means a bank has bought, that only will be classified as fixed asset. Otherwise, it will be classified as other asset. इसके सारे के descriptions है. You don't have to worry. What do you mean by interest earned, interest expended? Say for example, share capital. What is share capital includes? What all headings like authorized capital, issued capital, subscribed capital, called up capital, everything is there over here. Reserves and surplus, what it includes? Statutory reserves. So there can be a line that what is a statutory reserve and उसके options पूछ लूंगा मैं. What is a statutory reserve? A reserve which is created under the law. This is compulsory as far as RBI rule is concerned. So that is why. So I can ask a question like this way, that reserve created under the law is called as. So you have to understand it is called as statutory reserve. Or I can ask as that HDFC Bank issued shares of rupees 10 each at rupees 1,500. The profit will be transferred to. Now you are all TY students. Come on, you can know that. That much so you will be knowing that what it is called as. Is it called as capital reserve? Is it called as PNL? Or is it called as share premium? Or security premium? What you would have heard. बीकॉम स्टूडेंट्स हो गए या बैच स्टूडेंट्स हो गए तो तुमने तो सुना ही होगा ये बी इट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटीज प्रीमियम. Okay, so those things are important. For example, now deposits, what can come under deposits can be demand deposits, saving bank deposits and term deposits. Demand deposits is basically at any point of time that you ask money. वो savings account से हो सकते हैं, current account से हो सकते हैं. यहाँ पे उन्होंने bifurcation दिया है from banks and from others. And savings bank deposits, term deposits are basically anything. It can be fixed deposit, recurring deposit, anything is called as a term because there is a term attached to it. That is why. So they are called as term deposits. Borrowings means loans that you have taken, loans from RBI, loan from other banks, loan from other institutions and agencies. These are called as borrowings. Other liabilities and provisions means basically, as I think we did last time, that time I had told that there is nothing called as creditors in banking sector. We don't use the word creditors. So creditors तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे होता है for example inter office adjustments. एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, सेम बैंक के एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को कुछ एडजस्टमेंट्स रह गया है तो वो अगर it is credit balance, then it comes under other liabilities and provisions. Then you have is cash and bank balance with RBI. So that is known to you. There is no problem with it. Money at call and short notice मैंने explain तो किया है. If you want, I can again explain it. It's a very simple thing. For example, HDFC Bank has got deficiency today morning, and they cannot do anything. They tried their level best to get the money, but they cannot get it from their own departments. Their old departments are running out of cash. So what they do, they ask the other banks besides them is SBI. They tell the SBI that you give me the money.
SBI will never give anything for free, and neither HDFC gives it for free. So this is called as call at money and short notice, which means ये 7 days का इनका एक period होता है कि जिसके अंदर whatever money they have taken from each other, no, that उसका एक interest rate रहता है, एक special interest rate रहता है, this is called as call money rate. ये सिर्फ बैंकर्स के बीच में ही चलते रहता है, ये उसमें कोई और नहीं आ सकता, तो उसके लिए दे कीप ऑन ट्रांसफरिंग. बट इन बैंक बिकॉज यू डोंट जस्ट एक ये छुट्टे जैसा करने जैसा नहीं है कि 500 का छुट्टा दे दो ना सर, ये ऐसा नहीं है. यहाँ पे जो बातें होती है ये शुरुआती होती है 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ से. इट स्टार्ट्स विद दैट काइंड ऑफ एन अमाउंट. So basically on that basis you bring out money at call and short notice. So this is what you need to know about it. So can you explain this again? This is very simple. For example, let's take you are going to HDFC Bank for your money. HDFC Bank doesn't have money only. Can HDFC Bank tell you that Disha, don't come to me, I don't have money? What will happen? It is your money. How can somebody deny you to take money from your account? Right? ATM is not Yeah. working, that is fine, but nobody can deny you, no, if you want money from your bank. Because Yes. it is a rule, it is a law which bank has said. So now when you go, but HDFC Bank doesn't have any cash remaining with them. All the cash has been taken away by somebody or the other. So then what to do now? So what do? They cannot deny a customer any kind of money. So what they do, they go to SBI, say that you transfer certain amount to me, send me जो बाजू का ही ब्रांच होगा तो उससे पैसे कैश ले लेंगे. It's called the money at call and short notice. क्योंकि ये 7 दिन में इनको चुकाना होगा ये पैसा, और 7 दिन का इंटरेस्ट लगता है इनको वैसे. तो तुम बोलोगे कि सर SBI क्यों देगा? ऐसा कुछ नहीं है. वो कांदिवली ब्रांच के पास पैसा खत्म हो गया, हो सकता है कि साउथ बॉम्बे की SBI के ब्रांच के पास पैसा खत्म हो गया तो HDFC ने उसको दे दिया उधार पे. वो होता है. It can be between any banks, no? It can be between any bank, any bank. Okay. General term between banks. It can be between any banks. So that is what. सर आपने अभी वो बोरोविंग्स का एग्जांपल दिया था ना इसके HDFC का ही, वो वापस समझाइए ना सर. It's very simple. HDFC Bank takes money at call. Same thing, money at call. Let's say Disha goes to HDFC Bank. HDFC Bank takes money from SBI. Correct? Now for SBI, it is an asset because SBI is the giver of the money. No. Who is borrowing the money? HDFC. Me. So HDFC will say that it is my borrowing. I will write it in borrowing. Okay sir. As on Thank balance you. sheet date, if this is not settled. As on balance sheet date, if these both things have not settled. So for example, 30th March, Disha goes to HDFC Bank for taking her money out. HDFC doesn't have money. HDFC says to SBI that you give me money. So for SBI क्या बन गया? ये asset बन गया. क्यों? क्योंकि SBI ने पैसा दिया ना. बराबर. पैसा किसने लिया? Hmm. HDFC ने. HDFC ने. तो SBI के लिए asset और HDFC के लिए liability हो गई. Liability. Okay sir. As on 31st March ये deal settle नहीं हुआ है, so it will come in my balance sheet. As simple as that. So this is what you need to understand. Then comes investments with the what simple government securities, gold, silver, bonds. So I can give an exam. I can give an option in exam that Bank of Baroda has government security worth rupees 5 lakh, bond worth rupees bonds in RBI worth rupees 70 lakhs, and gold worth rupees 50 lakhs. तो कैलकुलेट द टोटल इन्वेस्टमेंट्स एट द बैंक है. तो वो भी हो सकता है, वैसा भी आ सकता है. बहुत सिंपल से क्वेश्चन हो सकते हैं. आपको सिर्फ दिमाग लगाना है कि कौन से क्वेश्चन में आपको कहाँ पे क्या लिखना है बस. फिर आता है एडवांसेस में जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में पूछ सकता हूँ दैट कैश क्रेडिट्स ओवरड्राफ्ट एंड लोन रिपेबल विल बी रिकॉर्डेड अंडर विच शेड्यूल. तो शेड्यूल 8, 9, 10 मैं ऐसा दे दूंगा नंबर, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इट इज शेड्यूल नंबर 9. Cash credit, bank overdraft and loans and advances for a bank, it is an asset. Money going out from a bank in the form of given to somebody else is always an asset. Please come out from that mentality. You will then understand more easily. Money जब बाहर गया बैंक से तो वो it is an asset for the bank for the purpose of loan, जिसके ऊपर बैंक पैसा बनाने वाला है. Always remember that.
मैं मरचा नहीं डांडी फेंकी क्या फेंकी Then comes fixed assets, which is known to you. What is fixed assets? So I don't want to waste your time and my time. Then you have other assets. May already one example I have given. Of other assets, may it is not like there's not going to be any kind of an inventory. There's not going to be an inventory in banks. Why? Because banks are service oriented units. इसके लिए शायद से तुम स्टेशनरी एंड स्टैम्प्स देखोगे वहां पे वो होता है स्टेशनरी हो सकती है बट डेटर्स और क्रेडिटर्स और बिल अपने अब तुम बोलोगे सर बिल रिसीवेबल क्यों नहीं आया क्योंकि बिल्स यहाँ पे नहीं आएगा बिल्स ऑलवेज इज एन asset for them that is why it is coming as here bill purchase and discounted because their work is not to issue the bills their work is to discount those bills and keep it with them so that is what the bankers will be doing बट यहाँ पे तो फिर क्या आएगा तो एनीथिंग विच इज पेंडिंग एज सच जैसे इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट अगर नेट डेबिट है डेबिट का मतलब कि सेटलमेंट अभी तक हुआ नहीं पैसा लेने का रह गया है तो दैट इज कॉल्ड एज इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट डेबिट अदर देन दैट नथिंग लास्ट में शेड्यूल नंबर 12 होता है वो है कंटीजेंट लायबिलिटीज व्हाट इज कंटीजेंट लायबिलिटी और हाँ उसके पहले मैंने जो एक एग्जांपल दिया था कि HDFC बैंक टेक्स ओवर एन असेट फॉर लोन्स नॉट पेड वो होते हैं नॉन बैंकिंग असेट्स अक्वायर्ड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम्स मतलब कि अगर सपोज किसी इंसान ने लोन लिया बैंक से अब वो लोन वो रीपे नहीं कर पाता है he is not able to repay so but obvious bank will take over his property that property once bank takes over that property will have to be kept with the bank only but where bank can record it cannot record it into fixed asset because the bank is not the rightful owner of that property please keep in mind bank was only the guarantor for that property तो इसके लिए other assets में आता है rightful owner of the property का नाम किस अब there can be somebody who will argue with me stating that how can you say that sir बैंक ने पैसा दिया था ना प्रॉपर्टी पे नाम किसका है बैंक का है कि तुम्हारा है बैंक तुम्हारे पास से कभी भी पैसे के लिए वो मांग रहा है सिर्फ वो ले लेगा तुम्हारे पास से बैंक इज जस्ट गोइंग टू टेक अवे दैट मनी फ्रॉम यू बट इट इज नॉट गोइंग टू it is not the property belongs to him the property doesn't belong to bank ever that is the Possession will not go to bank, na? possession I mean the rightful owner or the rightful ownership is never with the bank Okay. yeah so that is why then comes contingent liability और इसमें तो काफी questions हो सकते हैं what is contingent liability in basic terminology if I say it is called as in the happening of events as simple as that in the happening of events if some events which are going to take place and you are knowing that these events are going to take place then you have to write it for example I'll give a very simple example what was the date when covid struck to India and the lockdown started Lockdown wasn't after 22nd March 2020. correct पक्का ना हाँ सर तभी तो ये था ना जनता कर्फ्यू तब से स्टार्ट हुआ ना लॉकडाउन है ना one second give me just 1 minute I need to give you something ट्राई कर रहा हूँ कि आई कैन शो यू समथिंग दैट इज व्हाई unfortunately I'm not able to get that thing which I'm trying to showcase you डाउनलोड नहीं हो पा रहा है वो
is 10 MB file, so it will take some time to download. But yes, it's for downloaded now. So, Yes. so you will only ask objectives or sums also for internal exams? ऑब्जेक्टिव्स में सम हो सकते हैं ना, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया अभी अभी। नहीं वैसे नहीं, जैसे लास्ट लेक्चर में आपने कराया था ना वैसे। हाँ, वैसा ही हो सकता है ना। Okay, so like for 1 or 2 marks or 1 marks के लिए just calculating profits, okay. that way calculating profits, calculating loss, something like that. NPBT हो सकता है, this type of stuff. वो तो like 1 or 2 marks का जो कैलकुलेशन होता है ना वो ठीक है। Every question is 1 mark. All questions are for 1 mark only. Okay, तो so we आपका will आवाज नहीं आ रहा है। only uh, I can't hear. I mean, there are two noises, so I couldn't understand. what sir? All questions will be for 1 mark, beta. Okay, so only MCQs will be there, not any sums or No, odds. no sums. Only MCQs. Okay, thank you. Okay. I asked you certain things with respect to COVID. Why did I ask you now? COVID, I think, stuck India. It didn't stuck too hard at the start point because November 19, I think COVID is called as COVID-19, correct? And why it is called as COVID-19? The reasons are very obvious because it was in November 2019 when China detected its first patient of COVID. And that is where China came out and said that we are in a big trouble. And then it kept on going. Okay. And it took somewhere around 2019 से लेके India was not stuck till January 2020. I clearly remember, and India got its first patient in February 25th. को India को first patient मिला 2020. Almost when you are coming to the financial year ending, right? Now when you come to the financial year ending, almost your year is getting over, no? तो क्या लेना देना कोविड से सर? March 23 को, if I remember clearly, all over India 1 month का लॉकडाउन लग गया March 23 को, correct? You can go back and check it also. I don't mind. You can check it out because I remember the dates very clearly because वो time पे exams होती थी बच्चों की, इसके लिए मुझे clearly remember. And now look at this. This is a annual report of SBI Bank, which is of 2019-20. मतलब 1st April 19 to 31st March 2020. And this is what they have given in their annual report. The first report which came, they said that the asset reclassification करना पड़ा हमें, and because of which this moratorium and deferment was extended and 5,63,000 का हमने deferment किया है. उस टाइम पे जो भी पैसे आने वाले थे वो गवर्नमेंट ने उनको बोला कि आपको डिफरमेंट करके रखना है. इन्होंने अपने पूरे एनुअल रिपोर्ट में
जबकि इम्पैक्ट सिर्फ 7 दिन का था। इन्होंने अपने सारे एनुअल रिपोर्ट में, इफ यू सी COVID-19 62 times have come. 62 times this word COVID-19 was used, which means that they have written in their books, and this is what contingent liability in the happening of events. So what could have happened in the happening of events? This COVID-19 pandemic will hit them sharply. You can read over here, economic overview. Global trade also experienced a setback with goods and services trade growth below 1%. And they are saying all these things. Why? However, the financial volatility has significantly increased since March after the spread of COVID-19 pandemic. Decline in asset and commodity prices and drop in equity market has reached unprecedented levels. Moreover, uncertainty around the prospect of production cuts keeps oil prices under pressure. This is what you need to know, that why do they mention all these things? They mentioned all these things because they have to tell about their shareholders that what could happen, what could be the impact of COVID-19 could be. And that is why you see there are 62 times this word COVID-19 appeared into their things. I'm just trying to bring to your notice. I can see something in other area. कि इनके पास कुछ कंपनीज, कुछ लोगों ने, फॉर एग्जांपल सर्टेन पीपल हु डू ट्रेडिंग, दे कीप सर्टेन टाइम्स शेयर्स ऑन सिक्योरिटी, मींस गिरवी रखते हैं. When the COVID-19 struck India and when the whole India was put into a lockdown, when you were into lockdown, what happened was, the first thing happened was the share prices, now they are at very all-time high, but they started falling very heavily. So for example, if I remember one company like Tata Steel, which was trading at 750 rupees, the price of that stock became 350 rupees in just 2 days. 2 days, the price of that stock became 350 rupees. Stocks which were at very high price just discounted like anything. This created a problem for them. I mean, a company like SBI itself, State Bank of India, India's biggest bank itself, which was trading at somewhere between the range of 285, 290K range में थी. That company came to 190. I remember because I bought that share. I know that. That is why I'm saying it. So 190K range में ये share आ गया था. So just imagine the value that it eroded. And this is what happened to their prices. Look at it. They brought out one shares, SBI Cards company आई थी February में. And because of this COVID, the prices just got hammered like anything. Look at here, bracket में they've given example COVID after excluding COVID impacts, 489 crore towards additional credit provision. This is what you need to know, that this had to be rewritten and they had to write this again. That is what contingent liability is all about in the happening of events. And that is why these have, and you can, this is just one, I'm giving you an example. You can please go and search. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स तुमको मिल जाएंगे. ऐसे हर कंपनी में तुम देख सकते हो कि कितनी बार कोविड का विषय आया होगा. 62 times this COVID name had come. So this is what you have. This is what was there and the format. Okay. So this is the format. Then comes contingent liability में तो बहुत सारी चीजें आ सकती हैं. Interest earned. What do we mean by the term interest earned? Means I have already explained you. For example, I can give even Disha, I can give a question like Saraswat Bank Limited has got the following interest from saving account. Sorry, interest earned from loans, interest earned from cash credit, interest earned from bank overdraft. Calculate the total interest earned. It can not be there. It can be there. 1 mark के लिए क्या जाएगा इसमें? तो नहीं जाएगा. It's just for 1 mark. Same thing, interest expended. Now I can give you interest earned and interest expended, and I can ask you calculate the profit. That way. So always it is a possibility. It is all there. And the meanings of everything I have given, it is there in schedule number 17, disclosure of accounting policy.
which means that what and which way you have done your accounting policies, you have to disclose it. So that is what given over here. So how you write it down? So capital में क्या क्या आएगा? तो इसका तो पूरा note, इसमें से भी MCQ आ सकते हैं. हाँ, Sir, what is interest expended? what is interest expended? Yes, sir. Expense. नहीं मतलब मीनिंग क्या हुआ उसका? इंटरेस्ट के क्या क्या खर्चे किए उसका तो मैंने दिया था ना, बुक में दिया है मैंने मेरे नोट्स में. इंटरेस्ट एक्सपेंडेड मींस द मनी दैट बैंक स्पेंड फॉर टुवर्ड्स इंटरेस्ट, गिविंग यू इंटरेस्ट, Okay. दैट वे. अगर नहीं समझ में आया तो इधर देख लो. What is interest expended? So interest on deposit includes interest paid on all types of deposits, including deposits from banks and other financial institutions. Includes discount or interest on all borrowings and refinance from the Reserve Bank of India and other banks. So whatever interest that you pay will come over here. As simple as that. In simple words. Interest expended का मतलब होता है ये. अब हर एक चीज का मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिख के दिया हुआ है. आप लिख के मैंने नहीं दिया, टेक्स्ट बुक में दिया है. बाय द वे मैंने नहीं दिया है. ओके. Am I clear or does it make sense, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Your concept Yes, sir. clear? जो थोड़ी सी ध्यान रखना वो है ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट. नॉन परफॉर्मिंग ये जो परसेंटेज है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना. अप टू 1 ईयर तो 25%, 1 to 3 years है तो 40% एंड मोर देन 3 years. इसका एक्सप्लेनेशन मैं एग्जाम के बाद फिर से देने वाला हूँ, डोंट वरी. फिलहाल के लिए तुम लोग सिर्फ परसेंटेज याद रख लो इसके, क्योंकि फिलहाल के लिए तुमको परसेंटेज बहुत काम आएंगे इसके. ठीक है. एक है 0.25% करके यहाँ पे होगा एक सब स्टैंडर्ड असेट में 0.25%. जस्ट कीप दैट इन माइंड. हाँ, ये डायरेक्ट एडवांसेस टू एग्रीकल्चर एंड एसएमई सेक्टर 0.25% इज द प्रोविजनिंग दैट यू हैव टू कीप. ओके. So these are small things which you have to keep in mind. इसके कोई sums मैंने नहीं लिए, मैं सिर्फ theory ले रहा हूँ इसकी. So there are no sums of it, okay, of NPA, but NPA is very important. Well, your banks का जो वैल्यूएशन होता है वो बेस्ड ऑन एनपीए होता है. मतलब हर एक चीज का वैल्यूएशन अलग होता है. फॉर एग्जांपल you value a company based on what it sells, right? If I have to value Maruti, so I will value Maruti based on what number of cars that it is selling. But banks ka valuation is not based on what I will value. On what I will value? How do I value banks? तो एक होता है उसका कासा रेशियो, which is very important. अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है कासा रेशियो, बट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाओगे तो ये सब वर्ड सुनने पड़ते हैं तुमको. तो कासा इज करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट रेशियो. मतलब क्या? The proportion of account, current account and CASA ratio maintained is very important. I have a banker in our class, so I will not say so much things, otherwise he will get offended and say उसका ego hurt हो जाएगा. वो बोलेगा कि I've been in a particular Barclays bank for past 3.5 years, and you come today and you start teaching all these things. What is wrong with you? Right now, मतलब एक आदमी है जो 3-3.5 साल उसने बार्कलेज में निकाले हैं, वो बोलेगा मेरे को, बराबर कि नहीं? अब नहीं है वो बार्कलेज में, बट अब वो सोचो कौन. राइट ना हर्ष? कोई तो भी था ना बार्कलेज में 3 साल. सर बीएनपी पारिबा. बीएनपी पारिबा, सॉरी आई फॉरगॉट. बीएनपी पारिबा. मैं बार्कलेज ही सोचता हूँ. बीएनपी पारिबा में बोलता है कि आप अचानक से आके आप सिखाओगे अभी ये सब चीजें. नहीं सर. तो ऐसा सब चीजें मत करो. दैट इज व्हाई. बट द थिंग इज दैट कि कासा रेशियो मेंटेन करना बैंक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है. तो दैट इज द वे दैट वी वैल्यू. द अदर थिंग दैट वी सी आल्सो इज द एनपीए परसेंटेज इंक्रीजिंग. एनपीए डिफाइंस लॉट ऑफ थिंग्स. एनपीए डिफाइंस दैट अ बैंक अपने पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा है किसी अपने ओनर. मतलब बैंक जिसको लोन दे रहा है वो पैसे ला के दे रहे हैं कि नहीं बैंक को. भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बैंक को. अब ये जो मैंने क्यों इसमें ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ काम का ही नहीं है, ये सब पुराना हो गया. Post this COVID struck, no, RBI came out with a circular stating that if the bank doesn't get, even if the
डिफॉल्ट इज फॉर 30 डेज। पहले तो डिफॉल्ट का रेंज था 90 डेज। अगर 90 डेज तक किसी इंसान ने आपको लोन नहीं दिया तो आप उसको एनपीए घोषित कर दो। 90 डेज मतलब 3 महीना। अब पोस्ट कोविड बैंक बोलता है कि अगर तुम्हारा एक भी दिन सपोज ड्यू डेट है 8 तारीख की और तुम्हारा 9 तारीख को पैसा नहीं आया ना, यू डिक्लेयर इट एज डिफॉल्टर। यू डिक्लेयर इट एज डिफॉल्टर। वेट टिल 8 9 नहीं आया, तुम सेकेंड डे पे कर दो, डिफॉल्टर बना दो उसको। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों, डिफॉल्टर बनने से क्या होगा सर ज्यादा से ज्यादा? सबके सब तो विजय माल्या और नीरव मोदी नहीं है ना, सबके सब, राइट? We cannot run away, no, like them. Yes. लोन ले लिया और भाग गए अपन। We cannot do that. चार्जिंग नहीं, चार्जिंग नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते सर। So then how do we the bank treats us as the way? So because if we are put into those NPA category, then life becomes very difficult for us. Okay, so that is why. So this was this was RBI circular. तो ये सब पुराना हो गया, तुमको अगर मैं ज्यादा जाऊंगा तो ये कुछ काम का नहीं है। थियोरी के लिए पढ़ लेना बस। I'll tell you very frankly, theoretically you want to study, you have to study. You want to नहीं, you have to study. But practically the things are way different in banking sector. The rules are changing even by seconds. Even by seconds I am saying. एक रूल आएगा सवेरे 9 बजे, 9:10 पे दूसरा रूल भी आएगा। So even by seconds rules are changing. So that is what you need to know. Okay? ये फुल फॉर्म पढ़ लो, ECGC क्या होता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी काउंसिल। ये इसका फुल फॉर्म। तो ये है मेरे पास जो बोलना था वो। ये 45 मिनट्स के सेशन में मैंने तो बोल दिया। 15 मिनट आप लोग बोलोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, पता चलेगा कितने लोगों ने सुना है। अंजलि सिंह से सुनती है मेरी बातें, बाकी कोई नहीं सुनता है। बाकी सब वो है, एक अंजलि ही है जो सुनती है मेरी बातें, सच्ची बोल रहा हूँ। इसके लिए उसने अपने आप को अनम्यूट रखा है, पता है अंजलि ने। अरे सॉरी क्या बात कर रही थी अंजलि? क्या हुआ उशरा? सॉरी कि अंजलि मुझसे बात करने के लिए उसने अपने आप को अनम्यूट किया है कि आज ओशरा और दिशा के अलावा भी कोई बात करेगा। शिवानी तो बात करती नहीं है, तो अंजलि ने अपने आप को अनम्यूट करके रखा है इसके लिए कि आज मैं ही पहले बोलूंगी, ओशरा को बीच में ही नहीं आने दूंगी। सर आपसे तो दिखा है ओशरा? चलो सॉरी के बहाने सुनाई तो दिया आवाज कि अंजलि करके एक स्टूडेंट है, उसका आवाज है, राइट अंजलि? यस सर। देखा ओशरा, we're losing the bet. People have started talking with me now. Yes, sir. Yes, sir. सर ओशरा मेरी फ्रेंड ही है। तो मैं किधर ना बोल रहा हूँ, फ्रेंड ही है ना। तो हम लोग मैं तुम्हारा टीचर हूँ, which means you want to say I also want the share of the Cadbury which you are going to get. ठीक है, फाइन। अंजलि let's see, let's just it out. मैं तो सोचा कि शिवानी कंचन सबसे ज्यादा बोलेगी, तो वही सबसे ज्यादा बोलती, तो मुझे लगा कि शिवानी कंचन बोलेगी। सर मैं भी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग नहीं है, हम भी हैं सर लाइन में। सर मैं तो बोलती हूँ सर, बराबर की नहीं? हाँ सर बराबर। देखा? तो एनी डाउट्स इफ यू स्टिल हैव, डोंट वरी, डाउट्स रखने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन मत लो, बिंदास। ये एग्जाम आपको पता नहीं रहेगा शायद से, क्योंकि किसी ने बताया नहीं रहेगा। अब मैं बताने का काम कर देता हूँ। एक्चुअली स्पीकिंग दिस ईयर you don't have only one internal test, you have 2 internal tests. हाँ सर, वो बोला हम लोगों को कंदन सर ने। कब बोला? मैंने सर को मैसेज किया था तो सर मुझे बोले कि 2 इंटरनल टेस्ट है और जिसमें अच्छे मार्क्स मिले ना वो चूज होगा। मतलब अक्टूबर में एक है, नवंबर में अपने दिवाली है। नो सर आइडिया नहीं है हमें। मैं बोल देता हूँ बेटा। सर रीजन क्यों है 2 इंटरनल टेस्ट का, दैट वी डोंट नो। नाइंसाफी है ना, I'll tell 2 you. इंटरनल। ऐसा कुछ नहीं है। ईशा क्या बोल रही तुम? आई डोंट नो व्हाट। नाइंसाफी है, 2 इंटरनल। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता था कि पहले है ना, पहले रूल ये था कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट जिसने नहीं दिया तो उसके लिए जैसे उसको देयर यूज्ड टू बी अ प्रॉब्लम ऑफ नेटवर्क गोइंग अवे,
there used to be a problem of, sir, I am not there, my family is not well, there is this problem, that problem. So there used to be a genuine problems to many students. Now so in that case what used to happen was, ऐसे भी हमको 2 एग्जाम रखनी पड़ रही थी, तो हमने ये सोचा कि why don't we give more test practices to students. तो 2 यूनिट टेस्ट रख दी. उसमें क्या होगा कि सपोज अब फर्स्ट यूनिट टेस्ट में किसी भी बच्चे को टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, बिकेम सम टेक्निकल प्रॉब्लम, तो उससे क्या होगा, अवॉइड कर सकता है वो. फर्स्ट इंटरनल नहीं दिया उसने, वो सेकेंड इंटरनल दे पाएगा इजी वे से. वैसा कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसको, उसके लिए ये 2 इंटरनल टेस्ट रखी गई है. तो तो इंटरनल टेस्ट ठीक है, पर अगर ऐसे ही सेमेस्टर नहीं होगा ना, 2 सेमेस्टर, नहीं 2 सेमेस्टर नहीं होगा, इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है कि मैं 2 पेपर बनाऊं. तो ठीक है. वो अगर तुम कॉलेज में होते, यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रहा है, रुको पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद करूंगा भाई, मैं रिकॉर्डिंग बंद करूंगा, उसके बाद मैं एक डायलॉग मारूंगा.